नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। जॉइनिंग अस टुडे आर द लीड स्टार्स, इनफैक्ट द डायरेक्टर ऑफ द शिप एज वेल। जी हाँ, एक फिल्म आ रही है जिसका पहले से ही ऐलान हो गया है कि ये फिल्म जो है वो हिट होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिट द फर्स्ट केस के बारे में। एंड एज आई सेड, टीम हिट जॉइनिंग अस टुडे ऑन न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। वेलकम ऑल ऑफ यू। फर्स्टली बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच उदय। मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था हाल ही में राजकुमार, और आपने कहा है कि ये बहुत ही अलग अंदाज में आप आ रहे हैं इस फिल्म में। दिस इज अ डिफरेंट अवतार ऑफ राजकुमार राव। व्हाई डू यू से दिस? क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ किया नहीं है मैंने। इंटेंस कैरेक्टर जरूर किए हैं, पर एक इतना रियल कॉप, कॉप बधाई दो में भी था, उससे पहले भी कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए हैं कॉप्स के, पर इतना इंटेंस, इतना ह्यूमन कॉप जिसके जो अपने काम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा समर्पित है, पर साथ साथ वो एक बहुत बैगेज कैरी कर रहा है। उसका पास का एक ट्रॉमा है जो बाबा ट्रिगर होता रहता है। एंड हाउ आई थिंक द वे ही हैज स्ट्रक्चर्ड द होल स्क्रीन पे एंड ऑल द कैरेक्टर्स, it was just beautiful to be a part of this film. That's why I said, for the first time, I thought somebody presented me in a very new way. एक्शन भी कर रहे हैं इस फिल्म में। क्या आप एक्शन करना आपको पसंद आया? क्या आप एक्शन फिल्म्स देखना भी पसंद करते हैं? Yeah, I really like doing action. Not many people know, but I'm a trained martial artist, and that really helped me doing in all the action sequences in the film. Because naturally, it came very naturally to me. I didn't really have to put too much of an effort there. But also the kind of action we have, it's very, very real, very raw. Like how two men fight, on street. It's that kind of an action. And the whole film actually is very believable. Like you would be engrossed in the story because you would think that I'm actually seeing a case going on, and I want this guy to solve this mystery. सानिया, लेट मी ब्रिंग यू इन हियर। आपको क्या पसंद आई कहानी के बारे में, फिल्म की टीम के बारे में, विच मेड यू से यस टू द प्रोजेक्ट? और क्या आपने फर्स्ट फिल्म देखी थी, द तेलुगु ओरिजिनल, जब आपने साइन की? I did watch the film, and it was quite pacey, and I really like watching and reading thrillers. I think it's one of my favorite things to do. It's snackable, and I really like watch. I loved watching the Telugu one also. So that is the reason I said yes to it, because बॉलीवुड में बहुत ही कम थ्रिलर बनते हैं, और अच्छी थ्रिलर्स बहुत ही ज़्यादा कम, उससे भी कम बनती हैं। थ्रिलर बनती है पर उससे अच्छी थ्रिलर्स कम बनती हैं। तो I had to be a part of it because the script was really nice and I really liked the character too. Also, one thing that I was actively manifesting was a film with Rajkummar Rao, and when this opportunity came in, I couldn't say no to it. Okay. क्यों करना चाह रही थी आप फिल्म राजकुमार राव के संग? और क्या आप इनको जानती थी फिल्म के पहले, और डिड यू गेट टू नो हिम थ्रू द वर्क ऑन सेट? Together, we were in Ludo together. Also, as an actor, I think he inspires me, and that is the reason I really wanted to work with him. मतलब मैं as an actor काम करना चाहती थी, और as a fan भी, मतलब मैं इनका काम बहुत पसंद करती हूँ, तो मुझे इसलिए इनके साथ काम करना था। कुछ कहना चाहेंगे सानिया के जवाब में? मैं थोड़ा सा awkward हो जाता हूँ ऑनेस्टली। मैं उसको थैंक यू बोलता रहता हूँ हमेशा, पर वो खुद इतनी अच्छी हैं। वी ऑल हैव सीन हर ग्रोथ एज एन एक्टर, एंड एवरी फिल्म शी इज delivering something new to her characters and portraying it beautifully. So I'm somebody who is a fan, who really admires what she does every time. So mutual admiration club over here, of course. Dr. Shailesh, let me bring you in here. Why did you decide to, and as you're saying, not remake your original, but reimagine, and this is a reincarnation, recreate, hit the first case, because बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट जॉब है नहीं। तो क्यों आपको लगा कि 2022 में अब समय सही है to bring the Telugu into Hindi audiences as well? कहानी बड़ा ऑडियंस को बताना था मुझे। हर एक आर्टिस्ट का ग्रीड होता है, पैसे और फेम से ज़्यादा आई थिंक ट्रू आर्टिस्ट का ग्रीड यही होता है कि ज़्यादा ऑडियंस मिले उसको। तो जब तेलुगु में बना रहा था तभी भी पता था मुझे कि हिंदी ऑडियंस के लिए बोलना है, तो होप कर रहा था कि तेलुगु में अच्छे से वर्क हो जाए ताकि मैं बड़ा ऑडियंस के पास इसको लेके जाऊं। और जैसे री इन्वेंट करना था मुझे स्टोरी को, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कॉपी पेस्ट ही करना है तो मेरा ज़रूरत नहीं है। कहानी का सोल पकड़ के, कहानी में जो काम किया है उसको पकड़ के, और उसको नए तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है, और हर एक आर्टिस्ट के साथ नया परफॉर्मेंसेस कैसे लेके आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वो मेरा काम था। आई थिंक अच्छे से किया मैंने वो, क्योंकि राजकुमार भाई भी बहुत अपना स्पिन दिए कैरेक्टर पे। सो मूवी बहुत अलग सा ही एक्सपीरियंस लगेगा, और ऊपर से स्टोरी भी बहुत चेंज की है हमने। सो आई ट्रीटेड इट एज अ न्यू फिल्म। I treated it again like my debut. So
एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है. They amplified what it was, and it's a much better film now. So yeah. But is it deliberate or coincidence that North may hit the first case is coming or South may hit the second case is already up for release? नहीं, ऐसा प्लान तो नहीं किया था, पर आई थिंक बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन्स एंड ऑल दैट प्रोजेक्ट्स इधर इधर से उधर, यू नो, द होल ओवरलैप ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैपेंड. सो दोनों प्रोजेक्ट्स एक साथ रेडी हो गए, तो इसीलिए यू नो द सेकंड केस इज ऑल्सो कमिंग अप. ऑफ कोर्स हिंदी में भी बनाएंगे सेकंड केस, अगर ऑडियंस ब्लेस करेंगे तो जिसमें भी हमारा राजकुमार राव ही रहेंगे. तो सान्या मल्होत्रा भी रहेगी. Are you मैं hoping वेट for कर that? रही थी ऑफ कोर्स. कि मेरा नाम कब लिया जाएगा. Are you hoping for that? That, you know, hopefully the film is lapped up by audiences, and as you said, you've enjoyed doing the Yeah, first yeah. case. So second case or third case, be Absolutely, yeah. I'm hoping for that because it's a great character. I think this character, it's like, you know how we've seen in Hollywood how there's one Sherlock Holmes and he investigates different cases. I'm not saying it's like Sherlock Holmes. It's a very different, it's a very Indian character. But I really thoroughly enjoyed playing Vikram Jai Singh, and I really wish, you know, it does well so that we can tell more stories. Of course, the second case would be a brand new story, not like a remake from the Telugu language one. So that, you know, we can continue this journey and have our own real angry young man. Yeah. Yes. Yeah. I have to ask you though, जैसे आप कह रहे थे कि not many people know कि आप एक trained martial artist हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि कब ये शुरू हुआ, दिलचस्पी कैसे आई मार्शल आर्ट्स में, और क्या उम्र थी आपकी तब? I was very, very young. And I was a kid when I started learning martial arts, and it happened just like that. We used to go in summer vacation. We used to go to the stadium in Gurgaon, Nehru Stadium, and our elder brother. So I grew up in a joint family. So all our brothers used to go this morning walk ke liye, and my elder brother used to teach us filmy fights. They say yeah, and then one guy was sitting there one day, and he said कि तुम लोग को सच में सीखना है, and that guy was eventually became my taekwondo coach, Mr. Yamin, and then I was the only one who actually continued it and went on to win gold at national level some couple of times. But then when I started acting and I thought of becoming a film actor, then of course everything took a back seat and my whole focus shifted just towards acting and nothing else. But अभी भी टाइम मिलता है? Do you practice or not really? Sometimes I won't say very often, but yeah, sometimes. Also, when you do it for 9-10 years, I think the muscle memory always remains. It's like swimming. Of course, the stretching and the flexibility might have taken a toll, but yeah, those beats, those rhythm, those kicks would always be there. Were you fond of sports? I have to ask you, when you were younger, of course, you've done dangal, like we've seen before. I was in school, like not that much. I was much more into like dancing and all. I got into fitness after doing dangal. उससे पहले तक फिटनेस से मेरा कोई इधर में मेरे को लगता था आई वाज क्वाइट फिट, बट देन आई वाजंट. आई हैड लाइक सम रियली अनहेल्दी हैबिट्स ऑफ ईटिंग. सो आई थिंक दैट चेंज्ड आफ्टर डूइंग दंगल मेजरली. बट डांस के प्रति आपकी भावना थी, तो डांस में क्या आपने ट्रेनिंग भी ली, और डांस में दिलचस्पी कब आई? बचपन से ही थी डांस और एक्टिंग की तो, बट ट्रेनिंग एट थर्ड ईयर कॉलेज आई स्टार्टेड ट्रेनिंग विद Mr. Fernando. He teaches in Delhi. He's a ballet teacher. So Russian Baganova style ballet सीखा और contemporary सीखा, और फिर वहाँ से ही ट्रेनिंग, फिर एक्टिंग. वो 1 साल 2 साल चला, उसके बाद एक्टर बन गई. And the rest, as they say, is history. Hit the first case पे मैं लौटूंगा. क्या आपने फर्स्ट फिल्म देखी थी before signing it, or did you watch it after you signed it to try and see how you can be different? No, I saw it once only, long back when we started our initial conversation, when the team reached out to me and said there's this film and they want to make it in Hindi, and I said sure, and we all were in lockdowns any which ways I was watching 2-3 films every day or series, so I said sure, let me just watch this one. I saw it and I totally enjoyed watching it. I'm so glad I saw it because as a cinema lover, as a cinema student, I enjoyed what I saw. I was very, very impressed with his debut film. Then I said, yeah, it's a great story. It's a very tight thriller, very fast paced. Then I said, let me, talk to the director and let's see what his take would be on the Hindi one. Then we spoke and we got instantly connected, and he told me that he wants to treat it like a new film and would want to change so many things in the Hindi language one. I said, that's a great idea. Let's not copy paste it. Let's treat it like a new film. And that's exactly what happened. We started shooting almost after a year, and all we had was our script, which was a Hindi adaptation, and
We were only consulting our script and nothing related to what he did in Telugu. But is it also true, because I read another quote of yours, that you don't really believe in doing remakes personally? Yeah, I'm not too fond of remakes, honestly, but this was the one which I could not say no to. It was very, very fast paced and a great story and a great character for me as an actor to perform. And when I spoke to him, I thought he's somebody whose intentions are right. And the makers are not doing it because, they want to just encash on a success of a regional film. He wanted to make it because he wanted to take it to a wider audience, because this is a story which should reach out to a wider audience and a story which should be experienced in theaters. And that's the reason, I said, this one we should definitely do. It's also, as you said, a film that should be experienced in theaters. आपकी भी कुछ दिन बाद आ रही है थिएट्रिकल रिलीज, बीच में आपके काफ़ी OTT रिलीजेस थे, तो फ़र्क क्या देखते हैं? और अब क्योंकि अब न्यू नॉर्मल शुरू हो गया है, तो डू यू बिलीव थिएटर्स एंड OTT कैन कोएग्जिस्ट? देयर इज इनफ स्पेस? I think they are coexisting already. Also, as creators, I think we have so much to do. The ecosystem has increased. We can experiment with the work that we are making. So definitely it can coexist. And I have seen a shift in my career. I have seen how OTT has given me that push to my career that I really needed. So I think it can coexist. Well, we certainly hope for that. But as you said, theaters के अलग मज़े हैं, और ऐसी फिल्म आई थिंक बिग स्क्रीन पे बिल्कुल ही छा जाएगी. तो हम ज़रूर उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिल्म हिट हो, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट. आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम पहली बार आपसे मिल रहे हैं, जैसे मैंने कहा, आपकी शादी के बाद. तो ज़िंदगी क्या बदल गई है? खैर, पत्रलेखा के साथ आपका रिश्ता काफ़ी सालों से है, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद से है. तो हाउज लाइफ पोस्ट मैरिज? इज दिस अ wedding glow we can see today? A lot of people actually have been telling me this, that you look, there's some good change in you post wedding. I'm happy if that's there, because of course I'm happy, being married, being a married man. Nothing much has changed, honestly. I think it's pretty much similar, because we've been in a relationship for the last 11 years, living in for the last 6 years together. But I'm sure there's some very subtle shifts subconsciously somewhere. Just the title has been changed now. Now, of course, when people introduce, we go somewhere and, if she introduces me or I introduce her, I say, she's Patrulekha and I'm her husband, Rajkummar Rao. That take a while too. Yeah. It's still sometimes like it's there's so much habit of just saying boyfriend, girlfriend. So even at times, even now, I think yesterday only I was just telling some student and said, oh no, I'm going to say, my girlfriend Patrulekha or her boyfriend Rajkummar. And like, oh shit, wait, no, not anymore. Yeah. We certainly hope that converts into box office success as well with Hit, and wishing you guys all the very best, और hope ये glow जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो 15 जुलाई के बाद भी बरकरार रहे. Thank you all so much for joining us. Always a pleasure. Conversation अवधेश के संग उदय प्रताप सिंह in Delhi, NewsX and India News. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.